So hello everyone. At this class I am going to discuss the numericals from NCERT exercise 13.1. That is, in that exercise the questions are given based on limits. Okay, so from last 2 days I am discussing limits only. I have given the concept, I have given the formulas, the theorems, even I have discussed 2-3 examples also. Now today I am going to discuss questions from NCERT exercise 13.1. Okay, so let us take question. Evaluate limit x tends to, limit x approaches to 4, 4x plus 3 divided by x minus 2. There is one question is there in NCERT. Evaluate limit x approaches 4, 4x plus 3 by x minus 2. So this is a rational function. Clearly we can say it is a rational function only, right? Because the function is in the form of px by qx. हमेशा जब लिमिट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब पहले फंक्शन को ठीक से देखना पड़ेगा. What kind of function is given in the question, whether it is a rational function or any other function. All right. So since it is a rational function, once you check the limit value, what is the value given here? X approaches to 4. So after putting the value of x in the given function, will we get a definite value or indefinite value? That one is the main question. Okay, after putting the value of x, generally क्या होता है कि rational function में जब हम लोग x का value put करते हैं, generally कुछ केस में undefined result आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि rationalize करते हैं, factorize करते हैं, then common factor को eliminate करते हैं, उसके बाद ही value को put करते हैं. Alright, but that is why I am saying that just you put the value of x in this function and check whether we'll get definite or indefinite value. वो कहाँ पे put करने से पता चलेगा? Just you have to put in the denominator only. Just you put in the denominator. Denominator में put करने से ये confirm हो जाएगा कि whether we are getting definite value or indefinite value. So since here x approaches 4 is given, so 4 minus 2 is 2. Yes, definitely it is. We can say that it is a definite value only, right? So therefore it is confirmed that we can direct substitute the value of x here. Working rule number 1. Working rule number 1 में क्या बोला गया था कि put x approaches a. Here a is 4. Put x is equal to 4 in the given function if the function gives us a definite value. So 4 into 4, that is 16. 4 into 4 plus 3 divided by 4 minus 2, that is 19 by 2, which is a definite value only. And this is the required answer. Okay, so this is one question. This question is there in exercise 13.1. I think it is question number 4. NCERT question number 4. Okay, next one more question. Let us take one more question. Limit x approaches minus 1, x to the power 10 plus x power 5 plus 1 divided by x minus 1. So it is also a rational function because this function is also in the form of px by qx. So that is why first of all you check whether we will get a definite or indefinite value after substituting the value of x in the denominator. Here x approaches minus 1 is given. अगर सिर्फ 1 होता तो वो undefined हो जाता because something divided by 0 undefined. But लेकिन यहाँ पे minus 1 दिया गया है, so there is no problem then because minus 1 we will get minus 2. So it is confirmed that we can directly put the value of x here. So minus 1 to the power 10 is 1, minus 1 to the power 5 is minus 1 plus 1 divided by minus 2. So this is equal to minus half, which is the required answer. Okay. So generally rational function में ऐसे check करना पड़ता है कि after substituting the value of x whether will you get definite value or indefinite value. If we get a definite value then there is no problem, we can proceed. But if we get any indefinite result then we have to modify the function. Modification means actually simplification. Factorize करो, common term को eliminate करो, उसके बाद फिर एक बार check करो put करके कि हम लोग को डेफिनिट वैल्यू मिलेगा या इनडेफिनिट वैल्यू मिलेगा. लाइक दिस ओनली, राइट. सो ये दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दो दीज आर रेशनल फंक्शन, बट हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन.
The next question is limit x approaches 3, limit x approaches 3, x to the power 4 minus 81 divided by twice x square minus 5x minus 3. Okay, look at this function now. It is also a rational function. मैं पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस में रेशनल फंक्शन ही दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली सर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन रेशनल फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत है. Okay, this is also one kind of rational function, px by qx form. So that means it is we have to check that the denominator is equal to 0 or not equal to 0. अगर equal to 0 होगा तो means we will get indeterminate value, undefined value. Okay, so that is why you have to check the value of you put the value of x in the denominator. 3 square is 9, 2 into 9 that is 18, 5 into 3 15, 18 minus 15 is 3, 3 minus 3 is 0. Moreover, if you substitute the value of x in the numerator also, 3 to the power 4 is 81, 81 minus 81 is 0. Means if we directly put the value of x here in this function, then we will get the value in the form of 0 by 0, which is meaningless. So that is why what you have to do here now, you have to simplify the function. Last दो क्वेश्चन में simplify जरूरत नहीं पड़ा था क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोगों को डेफिनिट वैल्यू मिला था, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है. So that is why we have to simplify this function. Means just we need to factorize the numerator and denominator. You know working rule number 2. If the function is a rational function, then we have to factorize the numerator and denominator if it is necessary. We have to factorize the numerator and denominator if it is necessary. Then cancel out the common factors. And after the cancellation only we can put the value of x. So here also we have to follow that working rule number 2. So factorize the numerator and denominator, that is limit x approaches 3. X to the power 4 can be written as x square whole square minus 81 can be written as 9 square. Yes. So we can use middle term split. Split in the denominator, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो. जरूरत पड़ सकता है, फैक्टराइज तो करना है ना न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को, तो फैक्टराइज करने के लिए डिनोमिनेटर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस 2x minus 3x minus 3. Okay, so limit x approaches 3. Numerator में क्या है, x square minus 9 square. It can be written as then x square minus 9 into x square plus 9 divided by, if I take now twice x common from denominator, it will be x minus 1 minus 3 common. This is 2x square minus 5x, so 2x square. So now if I write here 6x minus 6x plus x, then see what will happen, minus 6x, and if I take twice x common, it will be x minus 3, x minus 3. Similarly from here if I take a plus 1 common, then it will be x minus 3. Okay, so this is equal to limit x approaches 3. X square minus 9 can be written as x minus 3 into x plus 3 into x square plus 9 divided by x minus 3 into twice x plus 1. So look at the simplification now. After factorization, देखो factorize the numerator and denominator. So वो मैं कर लिया. After factorization you have to identify the term which we can eliminate. Yes, x minus 3 we can cancel, right? So after the cancellation, now if you put the value of x in this function, will you get a definite or indefinite value? If you put the value of x in this function, look at the denominator, it will be definite only, right? 2 into x, 2 into 3, that is 6 plus 1, 7. So here 6, 3 plus 3, 6 into 18 divided by 7. So this is equal to
108 divided by 7, which is a definite value. All right, so like this only you have to simplify. So this type of questions are important actually. एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है उसमें रेशनल फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चंस वैसा ही है एनसीईआरटी में ज्यादातर, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस मोर. जस्ट वर्किंग रूल नंबर 2 फॉलो किया. फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स एंड देन यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स. बिकॉज जब तक ये x minus 3 एलिमिनेट नहीं होगा तब तक अनडिफाइंड रिजल्ट ही आएगा. बिकॉज इफ यू पुट हियर x इक्वल टू 3, 3 minus 3, 3 minus 3, 0 by 0 फॉर्म में आएगा. सो दैट इज वाई वी हैव टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ टर्म so that we will get a definite value. All right, so this is question number 3 as per NCERT. This is question number 8, but मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा वो थोड़ा अलग तरीके का होगा. दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0, x plus 1 whole thing to the power 5 minus 1 divided by x. Look at this function. Look at this function. Though it is a rational function, but इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग को ऐड करना पड़ेगा या फिर कुछ सिंप्लीफाई भी करना पड़ सकता है, ठीक है. लुक एट दिस फंक्शन. ये फंक्शन को देख के कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पहले सोचना है. आई हैव गिवन वन रिजल्ट इन द लास्ट क्लास, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस a, x to the power n minus a power n divided by x minus a, which is equal to, we can write n into a power n minus 1 if a is always greater than 0. This a must be greater than 0, then only we can utilize this result n into a power n minus 1. तो मैं यही फॉर्मूला के बारे में क्यों सोचा, because you look at the numerator, x plus 1 to the power 5 is given. We can expand x plus 1 whole square, x plus 1 whole cube, but if it is more than 3, it is difficult to expand. It will take more time. It will take more time if the exponent is more than 3. So in such cases only, we try to use this result. In such a function, we will try to use this result. But for this result, the limit value must be greater than 0. Yes or no? a greater than 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट वैल्यू दिया गया है वो exactly 0 है. तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर सकते वैल्यूज. पुट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज डायरेक्ट अगर डिनोमिनेटर में हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट. सो टू अप्लाई एग्जैक्टली दिस फॉर्मूला इन सच टाइप ऑफ फंक्शन, the limit value must be greater than 0. But since here the limit value is not more than 0, so here we are going to use the substitution method. लिमिट याद रखना है ये बात. लिमिट वैल्यू चेंज करने के लिए, लिमिट वैल्यू मीन्स ये वैल्यू के बारे में मैं बता रहा हूं, ये वैल्यू को चेंज करने के लिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है. नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, वॉट एवर क्वेश्चन इज देयर, means limit based question. If you want to change the limit, if you want to change the value of this limit, you must use a substitution method. Okay, if you want to change the value of the limit, you must use a substitution method. So here also we have to change this value because a must be greater than 0. If you want to use this result, अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि यही रिजल्ट क्या जरूरत है, मैं बोलूंगा यस, because to the power 5 is there, it is difficult to expand. It is difficult to expand because x plus 1 to the power 5 and the constant term you can see 1 here is given. 1 to the power 5 also we can write. So that means तो न्यूमरेटर थोड़ा बहुत मैच हो रहा है ना, न्यूमरेटर थोड़ा बहुत तो मैच हुआ. Let us consider this x plus 1 as x. तो it is just like x to the power n minus a to the power n फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर के साथ थोड़ा सा मैच हुआ. सो दैट इज वाई ऐसे सोचना पड़ेगा फंक्शन को कैसे मॉडिफाई करना है. हमेशा रेडीमेड क्वेश्चन नहीं दे सकता है, कभी कभी ऐसा मॉडिफाई करने वाला क्वेश्चन भी दे सकता है, और ऐसा ही देता है जनरली. इतना रेडीमेड क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है. तो ऐसा सोचना पड़ेगा कैसा फंक्शन है और क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. सब्जेक्टिव के लिए तो ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, हार्डली आई हैव गिवन 7 or 8 रिजल्ट्स इंक्लूडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स. यस,
सो वो 7 और 8 रिजल्ट याद रखना, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो न्यूमरेटर को देख के थोड़ा सा आइडिया लगाया कि ये फॉर्मूला सुइटेबल है इसके लिए, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए तो जीरो को हटाना पड़ेगा। द वैल्यू मस्ट बी मोर देन जीरो, द वैल्यू मस्ट बी मोर देन जीरो। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, फॉर दिस यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी देखो कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लुक एट हियर, लेट व्हिच टर्म इज हियर, व्हिच टर्म इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये फंक्शन में कौन सा टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लुक एट हियर, 1 इज कांस्टेंट, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। इवन x इज आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, इट्स अ वेरिएबल, बट द टर्म वेयर द एक्सपोनेंट इज पावर 5, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज इसके लिए तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, यस और नो। x प्लस 1 टू द पावर 5 जो है, इसके लिए ही थोड़ा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है। सो दैट मीन्स यू हैव टू identify the term which is not in standard form. Whenever you have to use the substitution method in case of limit, you must identify the term which is not in standard form. Okay, so here clearly we can say that this x plus 1 is not in standard form. Forget about the exponent, 5 के जगह में 50 भी हो सकता है, 50, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, it doesn't matter, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट के लिए कोई टेंशन नहीं है, जो एक्सप्रेशन है वो देखना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, ओनली x प्लस 1, ओके। सो लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू h, सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू कैन राइट t, यू कैन राइट स्मॉल लेटर h, यू कैन राइट थीटा। सो थीटा हम लोग जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूज करते हैं, तो देखने में ऑड लगता है, यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ नहीं है, हम लोग थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट लुक्स लाइक ऑड ओनली, ओके। सो इन केस ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन you can substitute either small letter h or small letter t, okay। so let us put x plus 1 is equal to h, ठीक से देखना है। now as x approaches 0 as per the question, मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो what will be the value of h, 0 plus 1 is 1, so that means h approaches 1, नियरेस्ट वैल्यू मिलेगा। डेफिनेशन जब मैं दिया था फर्स्ट डे क्लास में, वही डेफिनेशन में बोला गया था, we will always get the nearest value always, yes। so if I put x plus 1 is equal to h, then as per the question x is approaches 0, which means if you substitute the value of x here 0, what will be the value of h, h is 1, okay। so therefore this function now can be written as limit h approaches 1. Now we can replace this x approaches 0 by h approaches 1. Why? Because x tends to 0 को यहाँ पे पुट करके ही तो h का वैल्यू निकाला, yes or no? So we can replace this x approaches 0 by h tends to 1. What about this x plus 1 now? This can be replaced by h to the power 5 minus 1 can be replaced by 1 to the power 5 divided by, देखो it is in the form of x power n minus a power n. What should be the denominator? x minus a होना चाहिए. What is x then? If x plus 1 is equal to h, if x plus 1 is equal to h, which implies can I write x is equal to h minus 1? Yes. So replace this x by denominator में जो x है उसको replace करना है by h minus 1. Because now the complete function must be in terms of h. क्योंकि अभी जो substitution method यूज किया, वेरिएबल क्या लिया, h, तो इसीलिए पूरा फंक्शन अभी in terms of h में आ जाएगा. That is why you must change the limit also. लिमिट वैल्यू में अगर x tends to 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे कहाँ पुट करेंगे? There is no x. That is why you have to replace this x by h only. Okay. Now look at the function x to the power n minus a to the power n by x minus a. यही फॉर्म में है. And moreover, a value of a must be greater than 0. Yes, 1 is always greater than 0. So that means therefore we can use this formula now. The formula is n into a to the power n minus 1. What is n here? N is 5. So 5 into a is 1 to the power 5 minus 1. So answer is equal to 5. So this is the required answer. Few more question I will discuss by using substitution method. Okay. So the next question, look at the next question. Evaluate
The question is evaluate limit x approaches 1, x to the power 15 minus 1 by x to the power 10 minus 1. X to the power 15 minus 1 by x to the power 10 minus 1. Look at the exponents. न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट है वो है पावर 15 और डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो पावर है 10, राइट? तो नाउ दिस फंक्शन इज लुक्स लाइक f of x by g of x form. In the last class also I have given like this type of example only. So since the function is in the form of f of x by g of x, so this function can be written as limit x tends to 1, x to the power 15 minus 1 divided by limit x tends to 1 or x approaches 1, x to the power 10 minus 1. Yes or no? Means we can write separately जो theorem में दिया था. Yes, f of x by g of x form में होने से we can write it as limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x. Now what do you have to do? Here 1 is there, right? And look at the limit value. This is also 1. This 1 can be written as to the power 15 or not. Similarly, this 1 can be written as to the power 10 or not. You have to arrange like this. You have to arrange. पावर के साथ पावर को मैच करो, ठीक है? x पावर 15 है तो इस 1 को भी 1 पावर 15 लिखा जा सकता है. सिमिलरली डिनोमिनेटर में x पावर 10 है तो 1 को भी 1 to the power 10 लिखा जा सकता है. Now the question is that why I am doing like this? Because just now I have explained one question. The question is limit x tends to a, x to the power n minus a power n by x minus a. जो फॉर्मूला है n into a power n minus 1 provided a is greater than 0. यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं ना, because it is also in the form of x to the power n minus a to the power n by x minus a जो है divided by x minus a जो है फॉर्मूला में, वो x minus a को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. यस, डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली x माइनस a फॉर्म में ही आना चाहिए. तो ये फंक्शन और नीचे का जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है तो अलग अलग फंक्शन है. सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 1. मैं लास्ट क्लास में भी एग्जैक्टली ऐसा मॉडल का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था. तभी मैं बताया था कि जब हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है f of x एज वेल एज इन g of x, मतलब न्यूमरेटर में एज वेल एज इन डिनोमिनेटर में अलग अलग से जब ये फॉर्मूला यूज करना है तो जो एक्स्ट्रा टर्म हम लोग डिवाइड करते हैं ना, न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में, तो आग बंद करके वो टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए सेम होगा. ये पूरा एकदम गारंटी है, ठीक है? सो न्यूमरेटर में जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सेम टर्म से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो. यस, so that if we eliminate x minus 1 then only we will get the original function. And why we have to divide this by x minus 1? Because look at the formula. फॉर्मूला के साथ मैच होना चाहिए. yes or no? मैं बोला था कि the most commonly used formula is this one. एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है इसमें मैं बोल सकता हूँ कि 95 to 96% क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला को यूज किया गया है. राइट, सो इन दिस वे वी कैन अरेंज लाइक दिस, राइट? सो न्यूमरेटर का वैल्यू अलग से निकलेगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू अभी अलग से निकलेगा. So the formula is n into a to the power n minus 1. Apply in numerator. What's the value of n? N is there 15. 15 into 1 to the power 14 divided by denominator में जो n है वो है 10. 10 into 1 to the power 9. So 10 by 15. Sorry, 15 by 10. That is 3 by 2 is the answer, which is a definite value. Yes. So like this type of questions are very very important for any exam, for board exam or for objective exam. ठीक है, तो ये सब बेसिक्स है एक्चुअली. तो सीखना पड़ेगा कहाँ पे मॉडिफाई करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, वेदर मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट. राइट, तो प्रैक्टिस जितना होगा उसी से आइडिया मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया और एक मॉडल का क्वेश्चन. और एक मॉडल मीन्स लास्ट क्लास में भी ऐसा मॉडल का एक्सप्लेन किया था. ओके, नाउ लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन. थोड़ी देर पहले जो मैं और एक क्वेश्चन बताया था, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. उसमें क्या था, 1 plus x to the power 5 दिया गया था. थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. लेकिन यहाँ पे जो पावर है टू दी पावर हाफ. लुक एट हियर, लिमिट x approaches 0, 1 plus x to the power half we can write minus 1 divided by x. Can we put the value of limit here in this function directly? No, because if you put the value of x here it will be undefined only. So look at the function now. Look at the function. 1 plus x to the power half minus 1 is there.
this 1 also can be written as 1 to the power half. Yes or no? तो वही फॉर्मूला को फिर से रिपीट करना है, x to the power n minus a power n by x minus a, but for this the limit value must be greater than 0. लेकिन यहाँ पे तो exactly 0 है. So what we have to do? Think about substitution. Whenever you want to change the limit value, then you must use the substitution method only. So for substitution method, what is the first step? For substitution method, you have to identify the term which is not in standard form. For substitution method, you have to identify the term where we can use substitution. तो कौन सा कैसा टाइप का टर्म में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं? द टर्म विच इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो लुक एट हियर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कांस्टेंट है. x इज अ वेरिएबल. कैन वी एक्सपांड 1 plus x to the power half? It's difficult. Although expansion formula is there in binomial theorem, but still it is difficult. 1 plus x to the power half कैसे हम लोग expand करेंगे वैसे? ठीक है. So it is confirmed that this is the term which is not in standard form. Forget about the exponent. मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सपोनेंट को मत देखो. जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे एक्सपोनेंट को नहीं देखना है. एक्सपोनेंट में हाफ के जगह में दूसरा फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Just you need to identify the term where substitution is applicable. So now it is confirmed that here we can use substitution. 1 plus x is equal to say t. अभी मैं t ले लिया. ठीक है. Now as x approaches 0 as per the question, means here if you put 0, 1 plus 0 is 1. So that means the value of t must be 1, the nearest value of 0. Alright. हमेशा याद रखना जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो जो वेरिएबल हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. और कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन में जो वेरिएबल का वैल्यू दिया गया है उसको यहाँ पे पुट कर दो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट सब्स्टिट्यूशन पार्ट. ऑलराइट. ओके. सो नाउ देयरफॉर दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज लिमिट t approaches 1. Replace this x approaches 0 by t approaches 1. We have to replace. इसी के लिए ही तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं ना. So limit t approaches 1, 1 plus x can be replaced by t. So t to the power half minus 1 can be replaced by 1 to the power half divided by, you must replace this x also. There should not be any term related to x. The whole function now should be in terms of t only. क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी t को substitute किया ना. So the whole function must be in terms of t. So wherever x is there, you just replace those x by t. So then how can we replace this x by t? Since 1 plus x is equal to t, which implies x is equal to t minus 1. T minus 1. Now look at the function. It is in the form of x to the power n minus a power n divided by x minus a. And this limit value is greater than 0 only. So therefore the formula is n into, here n is half. N into a to the power, a is 1 to the power half minus 1. So this is equal to half only. So this kind of questions you have to practice more. Not only from NCERT, from other books also. ठीक है? So ऐसा टाइप का questions generally practice ज़्यादा चाहिए. Substitution method. Many questions are there. Okay. So today I have discussed total 5 questions. So all 5 questions are actually important. I will continue the same in the next class also. Okay. So thank you for today.